Okay, chalo, now let me start. Yes, thank you all. Thank you. So in our last lecture, when we have started with the chapter, so the chapter which we have studied, it was been called to be as a logic, right? So when we have started studying about this chapter logic, so what is the thing that we have learned? What is logic? What is logic? Chalo, fatapat, keep answering. Okay, everyone, but please stop. Thank you all of you for your wishes. Thank you so much. And now start answering. Logic is defined to be as the art. It has been defined to be as a art, the art of reasoning. The art of reasoning is called to be as a logic. So in this given chapter, why it is compulsory? Why it is compulsory to study about the art of reasoning? What I have explained. मैंने क्या क्या बताया था? चलो एक बार recall करो but what I have explained. In this chapter, we are going to come across with the different types of sentences, right? बोला था मैंने यहाँ पे. And every time, what will be your task? तुम्हारा task क्या होगा? To identify whether the given sentence is a true or it is a false one. Whether the given sentence is a true or it is a false. But in order to declare that the sentence is a true or false, what you will require? तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? You will require the proper reasoning, and that art of reasoning can be studied only with the help of logic. बराबर? अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में अपना एजेंडा क्या था? एजेंडा टू स्टडी which type of sentences they are called to be as the statement of logic, and which of the sentences are not considered to the statement of logic. मैंने सिखाया था तुम लोग को ये. एक बार फटाफट रिकॉल करें बेटा उसे. A simple sentence which is a declarative, a simple sentence which is a declarative or assertive, which is a declarative or assertive, which is either a true or false. मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें समझ में आ रहा है? Which is either a true or false, but not both. But not both. Such type of sentences, they are being called to be as the statements of logic. And we know that the statement of logic, they are always been denoted by. So फटाफट मुझे आंसर दो. The statement of logic, they are denoted by. Yes, we use the small letters, and we use the small letters like P, Q, R, S. बराबर है? We use the small letters Q, R, S. बराबर? अच्छा, ये हुआ बड़ा. The which type of sentences are called to be as the statements of logic. अच्छा, apart that we also come across with some other type of sentences which are not considered to be as the statements of logic. Do you know that which are that sentences which are not considered to be as the statements of logic? The sentences which are interrogative, imperative, exclamatory, suggestive, and open. Such type of sentences, they are not considered to be as the sense of logic. तो भाई चल मुझे बताओ कि what is the meaning of the term interrogative? Correct. The sentence which ends with the question mark is called to be as interrogative. अच्छा, very good. What meaning of the term imperative? बराबर है. Very good. Perfect.
order or request. What is the meaning of the term exclamatory? Like what? Good. The sentence which ends with the sign of exclamation. Suggestive means suggestive. What is the meaning of the term suggestive? Is the suggestions. Perfect. And when I'm talking about the term open sentences, open bola open. Correct. The sentences which are incomplete. They are not considered to be as the statements of logic. ये नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था, राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट नोट नंबर 2? मैंने नोट नंबर 2 लिखवाया था तुम्हें? नोट नंबर 2 बेटा लिखवाया था मैंने? अच्छा, क्या था नोट नंबर 2? एक बार जरा फटाफट रिकॉल करो उसे. All the mathematical identities, they are considered as the statement of logic. ये मैंने सिखाया था तुम लोग को. All the mathematical identities, they are considered to be as the statement of logic, because we know that all mathematical identities, they are either considered to be as a true or as a false, but they will be neither true as well as but are partially false. Either they will be a completely or they will be but a completely false. वो कभी भी partially and partially false नहीं हो गया. जिसने नोट्स किए थे एक बार रब कर लो. All the mathematical identities, they are being considered to be a statement of logic. एक मिनट for check कर बड़ा. अभी आवाज आ रही है एकदम क्लियर? Now my voice is clear. You check it out from your side. मैंने तो मेरी तरफ से चेक किया. तो मैं क्या बोल रहा था कि all the mathematical identities
they are being considered to be as the statements of logic because they are either a true or they are the false. चलो अब ये देखते हो एग्जांपल्स देखते हो जो एग्जांपल्स तुम लोग वो तुम लोग सॉल्व करोगे चलो so now when we are going to start with the check now can you hear me आवाज आ रही है एकदम परफेक्ट क्लियरली निखिल एल्डन एकदम परफेक्ट राइट not going to start with some of the examples. We will identify what they are being considered to be as the statement of logic or right? For पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट,
CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। The equation is x square minus 3x plus 2 is equal to 0. X minus 3x plus 2 is equal to 0. For x is equal to minus 2 or x is equal to -1. तो भाई सब लोग अब मुझे फटाफट बताओ फटाफट कि in this given sum we can make out बेटा कि we are being known with the equation, right? चलो बेटा बच्चा लोग मुझे फटाफट मुझे बताओ कि the given equation is a which type of equation? चलो मुझे कौन बताएगा, मुझे फटाफट फटाफट कौन बताएगा the given equation is a which type of equation? Quadratic equation, बराबर? तो everyone knows बेटा how to split the quadratic equation. By splitting the middle term, you have to find the two numbers in such a way whose sum is -3 and the product is +2. तब उसके लिए अपने जो फैक्टर्स होंगे बेटा फैक्टर्स, वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? It will be -2, -1, correct? निधि, you made the mistake बेटा, निधि वर्धन एक बार चेक कर लो बेटा. It is -2 and -1, बराबर है? तो when you have to solve this given equation directly, तो ये इक्वेशन कैसे सोल्व होगा? How you will solve this given equation? You will solve this given equation to be as x minus 2 into x plus 1 is equal to 0. बराबर? x minus 2, x minus 1 is equal to 0. ये देख लो. Therefore, x minus 2 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0. Therefore, the value of x, either it is equal to 2 or the value of x, it is equal to 1. बेटा हम लोग को तो सब में क्या वैल्यू दिया था? क्वेश्चन में तो अपने को क्या बताया गया था कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज -2 और द वैल्यू ऑफ एक्स इज -1, बराबर है? इसका गिवन सेंटेंस इज अ ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी मुझे बताओ फटाफट फटाफट फटाफट. अच्छा, इट इज अ फॉल्स, बराबर है? तो इट इज अ स्टेट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. जल्दी जल्दी मुझे बताओ फटाफट. वेरी गुड बेटा, इट इज अ स्टेटमेंट. सही पकड़े है बेटा, तुम लोग ने सही आंसर दिया है. इट इज अ स्टेटमेंट. अभी ये तुम लोग डिक्लेयर कब कर पाए बेटा?
कि देख सेंटेंस इज अ ट्रू और फॉल्स कब डिक्लेयर कर पाए, जब तुम लोग को सम में ये देख बड़ा वैल्यू दिए, वैल्यू -2 एंड एक्स वैल्यू -1 बराबर। तो तुम्हें पता चला कि नहीं कि वेदर द गिवन थिंग्स इज अ ट्रू और फॉल्स, है ना। अगर सपोज हमें सेंटेंस में बड़े ये वैल्यूज नहीं दिए होते तो क्या हमें कभी पता चलता? नहीं पता चलता। करेक्ट। अच्छा, नाउ इफ आई से दैट x+2 इज इक्वल टू 5, बस। अब ये x+2 इज इक्वल टू 5, बट x का वैल्यू क्या है वो हमें समझ ही नहीं है भाई, सब में कहीं नहीं है, बस कुछ दिया है। तो क्या तुम लोग बेटा आइडेंटिफाई पाओगे कि इट इज अ ट्रू और फॉल्स? नो, वेरी गुड, बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, और इनकम्प्लीट अगर बोला बेटा इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब गिवन सेंटेंस एन एग्जांपल ऑफ बराबर है ओपन सेंटेंस, एंड ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। अच्छा चलो, अब यहाँ है, मैं अगर बड़ा सेंटेंस कहूं कि विराट कोहली इज बेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट, सब लोग बराबर ध्यान से सुनो। विराट कोहली, विराट कोहली अच्छा मिनट वेट, सब लोग वेट करो, बड़ा वेट करो एक मिनट।
Now check. Voice is clear. Voice is clear. 1, 2, 3. Yes, check. Clear. अच्छा, तो my question is, फिर से एक बार सब लोग ध्यान से सुनो. My question is, Virat Kohli is the best captain of the Indian cricket team. तो तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये given sentence is a statement, it is not a statement. चलो कौन मुझे बताएगा, फटाफट मुझे रिप्लाई करो फटाफट. विराट कोहली is the best captain of the Indian cricket team. अब यहां पे क्या होगा बेटा, अब यहां पे क्या होगा कि when I will say that कि विराट कोहली is the best captain of the Indian cricket team, तो some of you will agree, right? पहले ध्यान दो, यहाँ पे मेरी तरफ ध्यान दो बेटा, बाद में जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी आंसर देना. Some of you will agree, but some of them will say that कि नहीं सर, विराट कोहली is not the best captain, रोहित शर्मा is the best captain, या तो फिर महेंद्र सिंह धोनी is the best captain. Am I right? तो इसका मतलब ये होगा कि इन दिस गिवन एग्जांपल, यहां पे तो the given sentence, it can be a partially true and it can be a partially false. बराबर है कि नहीं भाई, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? The sentence can be a partially true as well as a partially false. भाई if it is a partially true and partially false, भाई सब लोग मुझे दिल से बताओ, can we consider this as the statement of logic? क्या उसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक कंसीडर कर सकते हैं? नो, वेरी गुड भाई, सब लोग ने दिल से बड़ा एक ही आंसर दिया है कि सर वी कैन नॉट कंसीडर दिस टू बी एज द स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक. नेक्स्ट एग्जांपल इज मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. क्या लगता है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? अच्छा भाई, व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? क्यों भाई, क्यों? क्या तुम्हारे पास वैलिड रीजन क्या है भाई उसके पास? जब मैंने कहा बेटा कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू एग्रीड? सम ऑफ यू विल एग्री, राइट? बट बाकी के जो अदर्स है बेटा, अदर्स वो क्या कहेंगे? नहीं सर, इट इज फॉल्स, मैथमेटिक्स इज interesting, mathematics is easy to understand. So in that case, by this given sentence will have both the answers, partially true